Hello everyone, good evening to all. My name is Shalini and I welcome you all in this special ऑनलाइन बुक लॉन्च इवेंट। फ्रेंड्स, इस दुनिया में देखने के लिए बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, लेकिन सबसे सुंदर जगह है अपने मन के भीतर की दुनिया को देखना। इसे कहते हैं माइंडफुलनेस। और यही माइंडफुलनेस के टॉपिक पर एक नई बुक आई है जिसका नाम है वे टू माइंडफुलनेस, द अल्टीमेट सोल्स गाइड फॉर माइंडफुलनेस। और आज हम इसी बुक को लॉन्च करने वाले हैं। इस बुक की ऑथर है सिजनी करन। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको हमारे आज के ऑथर से, जो कि आज के हमारी स्पेशल गेस्ट भी हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊं, उनसे रूबरू करवाने से पहले आई थिंक मुझे उनका इंट्रोडक्शन पहले देना चाहिए ताकि आप इजीली उनके साथ कनेक्ट कर पाए। सो सिजनी करन, शी इज अ dietitian by profession. She is a researcher, conscious dreamer, deep thinker, and a spiritualist. She is also a best-selling author. Her hobbies are cooking, simple science, and comics. So now let me invite guest of this event, author of this book, Cijini Karan. Cijini, welcome to this program. Thank you, ma'am. Thank you for a wonderful introduction. Cijini, how are you? First of all, many congratulations for your book, for this event. कैसा लग रहा है आपको? हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. Very happy, very excited because this is my first book, and I have become an author, a best-selling author. So very excited. वाओ, वेरी नाइस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिजनी करन की बुक द वे टू माइंडफुलनेस अमेजॉन पर लाइव है, अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप चाहें तो इस बुक पे ऑर्डर प्लेस करके इसको परचेज कर सकते हैं और इस बुक के जो बेनिफिट्स हैं वो उठा सकते हैं। सो सिजनी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप एक डाइटिशियन है बाय प्रोफेशन। सो ये शिफ्ट कैसे हुआ डाइटिशियन से और एक ऑथर बनना? सो कैसे पॉसिबल हुआ ये? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। मुझे राइटिंग बहुत चाइल्डहुड से पसंद है. From high school and all, I used to write essays and all. Yeah, of course. And then after becoming a dietitian, dietetics and nutrition is the subject which I am trained in. But writing all those things that researching, I'm not saying on academic research, but I used to research. I used to think a lot on certain things and certain situations and everything. So this all is in my blood, and the subject which I am trained in is nutrition. So when I got the opportunity from your side, write a book on 21 days in a 21 days. So the what I have gone through my life came first. So I thought I would be writing on mindfulness rather than diet and all. And of course, writing is a passion for me. Writing is a good passion. I always crave for writing. I started writing as a journaling and all. Whatever I have survived through my life, I started noted down in my diaries, journaling. As such, I have become an author now. And of course, I was a columnist in a health magazine for 1 year in our regional health magazine. And of course, I am a certified content writer in health. Four of my content were published in hub pages, and all these things are about my writings. So writing आपका स्टार्टिंग से पैशन रहा है? आप स्कूल टाइम से लिखते आ रहे हो? हाँ, स्कूल टाइम से मुझे एक पैशन था राइटिंग में. ओके, सो लाइफ के कौन से मोड पे आपने माइंडफुलनेस में एंटर किया? मतलब क्या कुछ सिचुएशन ऐसी थी या ऐसा क्या जोन आया आपकी लाइफ में, अगर आप बताना चाहें तो? Because I was a slow learner during my schooling, and of course, writing. I used to write my own self. Maybe my teachers will be scolding me. Please answer with the question. But I will be writing my own things and. Of course, I'm from slow learner, and after that, my meaning time is much more than anybody one else. I need some more time to cope up with things,
cope up with my circumstances. Of course, it lead to write about lead to practice mindfulness techniques, and of course, I struggled in my relationships, not Okay. only the partner with the partner, but coping up with every relation that we maintain. Women maintain with family relationships and all. I struggle a lot, and of course, Okay. uh, So anybody conceiving a suggest child. Yeah, of course. anyone After conceiving a child, I went to severe stress. I got my first child. I have only one child, one daughter. I got her after 5 years of marriage. Then, of course, after having child, again there will be a postpartum depression. So I was right. taking antidepressants and all, mood swings tablets and all, and I became very obese at that time. And of Okay. course, after that, I don't know what happened. Some mental trauma, two times, mental very severe attacks. Something Okay. related to frequency. I research a lot, but something related to some frequency, some mental trauma. The first one was I think in 2016, and the second one was on 2018. I think so. So, but Oh, I'm not bothered on that because I have left my past on the leave. I don't want to reveal what happened, but right, was right. severe, something like severe. I was shamed in the public, so, something like that. So I Oh, don't want to reveal it out. I have put all those things in the waste basket. So all this thing made me into some depression, some kind of depression, some kind of shamefulness. I don't know what. But oh, after that, practicing all these techniques, I come out from one perfection to another, something like that. I am coming out. वाओ वेरी नाइस मीन्स फ्रेंड्स देखिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के बाद किस तरह से सिजनी ने अपना स्ट्रगल बताया कि वो किस तरह से थी लाइफ में और आफ्टर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस उन्होंने इस चीज को ओवरकम कर लिया है आज वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है सो सिजनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप एक स्लो लर्नर जो खुद को बता रही हैं बट नाउ टुडे यू आर अ बेस्ट सेलिंग ऑथर आज हम बात कर रहे हैं आपकी बुक का लॉन्च है सो इससे अच्छी चीज और क्या होगी इसका एक Yeah, एग्जाम्पल है yeah, yeah. माइंडफुलनेस का सो Mm. सिजनी क्या जैसा कि आपने बताया कि हम अपने अंदर वो ऊर्जा ला सकते हैं वो रोशनी ला सकते हैं क्या रियल में माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस जब हम करते हैं सो कैन वी रियली लीड टू एनलाइटनमेंट इज इट पॉसिबल Yeah, of course. What I felt is, and like, I'm not a spiritual trainer or spiritual guru, but I love spiritual science very much. I was brought up by my mother, a single parent. I was brought up by a single parent. My father passed ओके away when I was 2 year old. So ओके my mother had to take all the burden. So she faced the life with courage and prayers. Mostly, I am seen by that, and through that I have attached to spiritualism. I'm not saying that I am a spiritual guru to explain much, जी but जी enlightenment is something like awakening in ourselves, awakening that we are having a self awareness of what we do or what we do with in a positive way, or from something from the subconsciously we are doing it by practicing mindfulness. It already naturally comes with it, what I come to understand that. And of course, it is something like that we are learning lessons from failure. So, from failure, we are getting more insight, राइट more insights from, because the truth come from what I come to understand that truth come from the mistakes. एग्जैक्टली I mean, yeah. Mistakes. The more mistakes we do, we will get the more insights, and it will alternately bring a radiance or enlightenment. Which will alternately more than enlightenment, I can say insights in राइट ourselves, insight in everything we see, we hear, everything. राइट राइट जितना हम परेशानियों से जूझते हैं जितना हम उनका सामना करते हैं मेरे ख्याल से उनसे लड़ने की जो जो कैपेसिटी है वो हमारी गॉड अपने आप ही हमें देता जाता है और शायद आने वाली लाइफ में उन सिचुएशन को हम बहुत इजीली फेस कर पाते हैं यही होता है Mm. एनलाइटनमेंट
सो हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे ये हमारी ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है सिजनी को लेकर या फिर उनकी बुक को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के, तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं और अपने जो व्यूज़ है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सिजनी, ऐसा भी होता है कि कई लोग बोलते हैं कि माइंडफुलनेस का जो है वो उन पे असर नहीं हो रहा है, या कई लोग बोलते हैं कि हमें तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए वो काम नहीं करता है। सो व्हाई व्हाई इट डज़न्ट वर्क फॉर सम पीपल? mm. Mindfulness is something like, very simply I can say, it is helping others without expecting in return. So when we put a lot of expectation and does something, sometimes it may work, it may doesn't work at all. राइट, So doing something very positive, in a positive manner without expecting in return is what mindfulness. So we can't expect a sudden result by doing mindfulness. The inner happiness is in within ourselves. I don't know. Mm, राइट। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम ले आते हैं कि हमें हाँ रातों-रात ही रिज़ल्ट मिल जाएगा या अभी कुछ महीनों में ही मिल जाएगा। तो हमारा जो ध्यान है वो प्रैक्टिस की तरफ ना हो करके उसके रिज़ल्ट की तरफ होता है। तो मेरे ख़्याल से एक रीज़न ये भी है कि लोगों को वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। दे कांट गेट दैट रिज़ल्ट दैट दे वर एक्सपेक्टेड। लाइक सो आपको जब जब आपने इसकी प्रैक्टिस की माइंडफुलनेस की, तो आपको क्या हाँ चेंजेस फ़ील हुए? क्या लगा आपको कि क्या चेंज आ रहा है आपकी लाइफ़ में? मेरी लाइफ में चेंज है कि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन था. ओके, Both introvert. I have so many phobias, social phobias, communicating with others. I don't know how to express my thoughts to a public. Whether I have the fear that whether they will judge me, everything like that. Some fears like that. First, what I understand that when I practice mindfulness, my fear vanished. Somehow my fear vanished, so I can now speak up anything what I feel like. Yeah, this is the thing which I did to achieve all these things. I can stand up for myself. I can my fear vanished. Of course, it and all this stress within me made me some illness. Made me some sort of illness, like um, and inflammatory diseases, anxiety. I don't know what happened within my body. Some burning sensation all over. ओके, A lot of inflammation. So physical well-being was also there by practicing mindfulness. There will be. I was keeping my anger, my frustration, everything within myself. So it made very difficult, worse health conditions to me. And ओके, I have seen my clients also, they are saying, yeah, because of all the stress, I am having facing bleeding, severe bleeding, and all. And of course, my sugar levels are going up because of the stress. So I also suggest them, you don't practice anything mechanically. Just be natural and do all these techniques to improve. So all these things are the most benefits which I felt that I have now. ओके, ओके। सो सिजनी, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आपने स्ट्रगल किया है लाइफ़ में, और फिर जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस में आए हो तब जा कर के इतना चेंज आपकी लाइफ़ में आया है। आप आज ऑथर बन गए हो, आप ट्रेनिंग करते हो, तो काफ़ी कुछ कर रहे हो अभी। बहुत चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ़ में। सो फ्रेंड्स, Huh. माइंडफुलनेस का ये असर होता है कि आपकी जो मेंटल ब्लॉकेज है, उसे खोल देता है। राइट सिजनी? जो मेंटल Yeah, yeah, ब्लॉकेज of होते हैं course. हमारे, Mm. उसे पूरी तरह से ओपन कर देता है। हम अपने आप से मिलना शुरू कर देते हैं। हम जो अब तक की कहते हैं ना कि इस झूठी दुनिया को देख रहे थे, उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, ऐसा ना करके अब हम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, खुद की ग्रोथ की ओर जाना शुरू करते हैं। राइट? सो Yeah. तो सृष्टि, आपने अभी बात की माइंडफुलनेस की कुछ टेक्निक्स के बारे में। आपने कहा कि आप उसकी प्रैक्टिस आपने की, तब चेंजेस आए, आपकी जो फिजिकल, मेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी सही हुई। तो ये क्या टेक्निक्स हैं? कुड यू टेल अस अबाउट सम माइंडफुलनेस टेक्निक्स? My book have about 10 techniques, but ओके, what I daily practice is self love. Self love is the best technique.
because I was a person who criticized me. I am the one who most criticized me. So I have all negative thoughts, negative beliefs, and all. So practicing self love, but we have to love ourselves. Then only we can see the world with different dimension, right? So Right, right. practicing self love is a best technique, and prayers. Of course, I have 15. I'm not a very deep. I'm not doing any rituals and all, but simple prayers like chanting mantras, of course, Okay. lighting lamps. So about 15 to 20 minutes, I will keep my time for praying, and of course, then the mm, तो journaling. आपकी फैमिली मेंबर्स भी जॉइन करते हैं आपको जो आप टेक्निक्स बता रहे हो उसमें आपकी जो डॉटर है वो हाँ, साथ में अभी ज्वाइन डॉटर डॉटर ज्वाइन ओके करते हैं। अभी मैं और डॉटर अकेला रहता हूँ। ओके मेरा हस्बैंड अब्रॉड में है, मस्कट में है। ओके तो अभी मैं और डॉटर आसपास की पेरेंट्स ही है, बट इन घर पर मैं और डॉटर। सो शी लाइक्स ये सब टेक्निक्स यूज करना इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना It's very difficult to make her do, but I am trying. ओके सो I want to practice mindful parenting too. Sometimes it is very hard. हाउ ओल्ड इज शी 8 years old. 8 इयर्स ओके ओके 8 years old. बट मे बी वो मदर को जब करते हुए देखती हैं तो जरूर इंस्पायर होती होंगी उसमें क्यूरियोसिटी होती होगी कि मामा क्या कर रही है सो आपको जरूर Yeah, ज्वाइन of करना course. चाहिए Yeah, of course. When my mother does all these things, I don't do as my mother does. My mother does in a very big way. Every ritual she tries to do, but I don't do such things. But we are seeing them, right? We are seeing them and practicing. So I don't put more pressure to my daughter. Let her see by herself and do. Let her do it by her own. That's the main thing which I am राइट राइट doing. राइट Trying. बच्चों को Yeah. किसी तरह का प्रेशर ना हम कर सकते हैं ना ही हमें करना चाहिए उनको तो Mm. सिर्फ हम बता सकते हैं सिजनी एक चीज ये है कि आजकल के सिनेरियो में क्योंकि आजकल के टाइम में आई थिंक माइंडफुलनेस जो है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ती जा रही है आजकल के कल्चर के हिसाब से सिचुएशंस के हिसाब से तो क्या लगता है आपको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है माइंडफुलनेस की अभी हम लोग ब्रेन से थिंक करते हैं, है ना? ब्रेन से, नॉट राइट विथ राइट हार्ट. Not एग्जैक्टली with heart. We don't have any kindness and compassion to others. What I felt was like that, because this is not our fault. We should move with our society, right? So, to आजकल की सिनेरियो में ये माइंडफुल प्रैक्टिस करना बहुत जरूर है. There are so many in teens. There are so many breakups, relationship. They are harming each other, mentally torturing and all. Of course, and we are thinking a lot. Negative thoughts are mostly in our ourselves than positive. So राइट practicing mindfulness will of course bring a positive vibe. Because what I said earlier, we never expect anything from others. We are doing it on a heartfully, something like that. मीन्स माइंड से अगर आप सोचेंगे तो आपको यही स्ट्रेस और यही डिप्रेशन आने वाला है अगर आप हार्ट से सोचते हैं तो शायद सही डिसीजन लेंगे और माइंड पर वो प्रेशर नहीं आएगा एग्जैक्टली Uh, यही आप बोलना चाह रहे हैं सिजनी yeah. तो हार्ट से सोचिए माइंड से मत सोचिए ऑल राइट सो Yeah. Mm. सो सिजनी आप क्या क्या करते हैं आप हार्ट से सोचते हैं माइंड माइंड से नहीं सोचते आप रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं आप कोई भी हाँ, डिसीजन लेते मैम. हैं तो हार्ट से हाँ, सही सोच करते हैं. ऑफ कोर्स. हाँ, हाथ हाथ से मुझे कोई नहीं. It is also said, Sijni, कि mindfulness is connected to law of attraction. Law of attraction और mindfulness को कभी-कभी होता है कि एक ही बता दिया जाता है, connected बताते हैं. So what is reality? क्या ये दोनों एक है या फिर कुछ difference है इसमें? Law of attraction is something different than mindfulness. I'm not practicing law of attraction, but I have
I have practiced some techniques like that before. When I was trying to conceive and all, some manifestation techniques and all. Eh? how you do these techniques? ये techniques क्या? Visualization and all. But I think law of attraction has a very much connected to mindfulness, because doing mindfulness, it relieves our blockages. And if there is no blockages, the law of attraction will naturally occur. What I understand was that mainly law of attraction works when there is no blockages in ourselves, and there are so many blockages like astral blockage, physical blockage, every blockages are there, and mindfulness helps to dissolve, it does dissolve our ego. So after that, that law of attraction naturally Mm-hmm. connect with us. Okay, That so universal vibration naturally connect with us when we are out of blockages. कुछ connection है law of attraction और mindfulness का Yeah, आपस में I है? strongly believe. I don't know how to scientifically prove that and all, but I strongly believe if something happened to me, Okay. my child is a great miracle for me. That's what I am saying. My daughter is a miracle for me. Yeah. All right. So any incident, कोई आप ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे, आपको लगा हो कि ये एक माइंडफुलनेस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने की वजह से मुझे ये चीज अचीव हुई है, कुछ ऐसा हुआ हो आपकी लाइफ में? आप बता रहे हो कि जैसे डॉटर एक मिरेकल है आपकी लाइफ में, ऐसे कुछ और आपने मैं अचीव अभी कर? हाँ हाँ। मैं अभी मैं एक डाइटिशियन हूँ एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में. So when I have a career gap, about 6 years of career gap, and at that time I went through certain traumas and all. So after that, it's very difficult to get into a healthcare industry after career gap. So I was craving for some job which I really want to do. हम्म. So after writing the exam, I just wrote as a very simple manner, but हम्म. I got the first rank and I entered something hospital very near to my home. So I was pretty much. This was a very luck, very much luck which I Okay. got. And of course, my child. Uh, so, I said that I don't want to reveal my past. There are so many हम्म. quarrels in between me and my partner, because there are so many. So the child we got it as a very much miracle. I Okay. don't even believe that. My husband also didn't believe. So when our pregnancy test was positive, when my Okay. pregnancy Yeah, test was positive. it's a miracle. It's a miracle, really. So, Yeah. Sijni, what kind of research, what type of research have you done to, to write this book? आपने क्या research Mainly, किया? हम्म. research the concept was what I get it from my clients and myself, what I have surveyed through the concept. Mainly, I have outlined the concept according that, and for research, I have done Google contents and all from Google's and wellness blogs mainly. ओके, ऑलराइट. सो आपके कोई मेंटोर हो, कोई टीचर हो जिनसे आपने एडवाइस ली हो? साथ में कुछ होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं जिनसे हम कुछ एडवाइस लेते हैं, कुछ है इस बैकग्राउंड के जिनसे आपने सपोर्ट लिया हो, हेल्प लिया हो बुक को लिखने में? No. Um, I didn't tell to anyone that I am writing a book. ओके, बिकॉज़ They all were यू आर surprised. रिजर्व नेचर, ओके, योर Uh, नेचर इज सो because रिजर्व. whenever I तो अभी क्या say it, रिएक्शन? there will अभी be so much procrastination. अभी जो Something. अभी जो बुक आ गई है आपकी, तो क्या रिएक्शन है आपके फैमिली मेंबर का, आपके फ्रेंड्स का? They said, "Wow, that was amazing. At least you did this thing without anyone's help." They were happy. ओके, ओके, सो यू आर आल्सो हैप्पी कि आपने जो सोचा था वो कंप्लीट करके दिखाया सबको. I didn't tell it to anyone. I didn't reveal it that I'm going to publish a book or. ओके. सो हाउ मच टाइम डिड यू इसके लिए कितना टाइम आपने लिया बुक लिखने में, आपकी जो रही है
कितने टाइम में आपने कंप्लीट करी इस बुक को? I was going on a tight schedule because I have to run the household, my regular duty, hospital duty, and हाँ after हाँ. that, teaching my child, as making a for school, and all. It was a tight schedule, but somehow I want to do this. So mainly early mornings and late nights, which I have spent more time अच्छा. researching all these things. Yeah. मतलब जब भी Three, uh, many 3 hours after 8 o'clock, 8 o'clock to 10, 11. And I am a early riser. I used to get up early in the morning, 5 o'clock, sometimes 4 o'clock. So I use that time well. Yes. ओके ओके. सो अच्छा, बुक लिखने के लिए आप जल्दी उठते थे, मुझे तो मॉर्निंग मतलब जब भी आपको दिन में टाइम मिलता था, यू स्पेंड टाइम इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ, और जब Good. भी आपको समय मिला तब आपने अपनी बुक को कंप्लीट किया उसमें. तो कितना ड्यूरेशन लिया इस चीज को, मतलब कितने मंथ्स में आपने इसको कंप्लीट किया अपने काम के साथ साथ में? बुक This राइटिंग का book, जो ड्यूरेशन, या हाउ मेनी मंथ्स यू टुक फॉर दिस? yeah, I had already pre-written some contents with me, so I have take all that things, and of course my new ideas were also put at me, and about 1 month, I think, 1 month I have ओनली. taken. ओके, सो 1 मंथ पे आपने बुक कंप्लीट कर दी. Huh. राइट राइट राइट. वेरी नाइस. सो सिजनी, ये जो बुक है माइंडफुलनेस की, ये तो चीज हम समझ गए कि माइंडफुलनेस का क्या मीनिंग है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं, जैसे सिजनी की लाइफ में भी उनको मिले हैं, अदर्स को भी मिलते हैं. सो हु शुड रीड दिस बुक? सिजनी, आपकी बुक के रीडर्स कौन हो सकते हैं? किस एज के लोग होंगे, कौन होंगे आपकी बुक के रीडर्स? किसे पढ़नी चाहिए? Readers, one who had a trauma like me. Actually, I am very blessed. I didn't have much. Something mental trauma has attacked me. So that thing insulted me so much. But there are so many people like physical abuse, emotional abuse, and all. So हम्म. anyone can read basically. So one who want to refresh or start with a new beginning, they can take my book as a foundation or a first step to a positive thinking, a positive vibe. And they are the one, best one. राइट राइट, बहुत सही कहा आपने. जिन लोगों को माइंडफुलनेस के ऊपर और रिसर्च करनी है, जो इसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, इसके बेनिफिट्स को यूज करना चाहते हैं, जैसे कि सिजी ने भी कहा कि उनकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, उन लोगों को ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए. आप अमेजोन पे जाकर के इस बुक को परचेज कर सकते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. और इस बुक की जो जितनी भी टेक्निक्स बताई है सिजनी ने इसमें, जो कि 10 टेक्निक्स है, राइट सिजनी? इसमें 10 टेक्निक्स 12, आपने बताई 12, हैं, 12, I think, 12. 12 टेक्निक्स हैं, तो आप Okay. उनको यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे की लाइफ में, उनको अप्लाई कर सकते हैं और इसके फायदे उठा सकते हैं और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं. सो सिजनी, एनी फ्यूचर प्लान्स, एनी फ्यूचर यू आर वर्किंग ऑन योर एनी नेक्स्ट बुक? Yeah, my next book will be on lifestyle hacks. So I am Okay. going to reveal some You tips have and tricks on started. lifestyle. You have Huh? started Yeah, your yeah, writing. Okay. yeah. Okay. Basically on health and wellness. Okay. So what is the So topic? there are so many beyond health. There are something like financial worries. All these things happens in our life. So I have put some of my experience and also some tips and tricks. ऑल राइट. सो ये आपकी नेक्स्ट बुक के लिए अभी प्लान्स चल रहे हैं, अब आप नेक्स्ट बुक पे काम करना शुरू कर दिया है. हाँ हाँ. सो और भी आगे आप बुक्स लिखना जारी रखना चाहेंगी अपनी राइटिंग प्रोसीजर को? Yeah, जरूर. ऑल राइट फ्रेंड्स, प्रार्थना और ध्यान ये दोनों ही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के अंदर भगवान हमारी सुनते हैं और ध्यान में हम भगवान की सुनते हैं. सो इन दोनों चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है. राइट सिजनी? सही कहा मैंने? Yeah, प्रार्थना, yeah. प्रेयर और मेडिटेशन, ये दोनों चीज हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा कंपल्सरी है. और आजकल की हेक्टिक लाइफ को देखते हुए इस तरह के जो मेंटल ट्रॉमास लोगों को आते हैं, मेंटली फिजिकली जो प्रॉब्लम्स होती है, उन सब से लड़ने के लिए, उन सबको सही करने के लिए माइंडफुलनेस अपने आप में बहुत ही अच्छी फायदेमंद टेक्निक है. सिजनी,
एक बार फिर से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपकी बुक लॉन्च के इवेंट के लिए, आपकी नई बुक के लिए, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी पूरी टीम की तरफ से। एनी लास्ट मैसेज टू आवर ऑडियंस, कुछ आप कहना चाहें हमें? हाँ, जरूर लेना मेरा book, because all the techniques are very simple. I have written in such a manner that is very readable, very simple. You don't need any cost, any money or anything. Very cost effective. The book is very cost effective. The techniques are very cost effective. It can be a act. It can act as a strong foundation. So, and you make these certain little habit changes in your life, then go for advanced mindful techniques. I didn't write about much ancient techniques. I'm not going into such ancient techniques, Eastern techniques and Tibetan sound healing, anything like that. But these all are simple habit changes that we can do within ourselves. Of course, mm, take the first step. My intention is that you should practice in such a way that I have written the book. So it's very simple and very easy to practice. And of course, don't expect a result suddenly. Do without any expectation. Make it into a habit. Then you will see the magic, the real magic. Something magic within ourselves. Don't find magic outside. Some magic or some radiance will come out of us naturally. राइट, राइट, थैंक यू सो मच सृजनी। फ्रेंड्स, जैसा कि इन्होंने बताया कि छोटे-छोटे स्टेप्स लीजिए, धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के आपको जो बड़ा गोल है आप अचीव कर पाएँगे, और माइंडफुलनेस का जो रियल जो बेनिफिट है वो आपको अपनी लाइफ में दिखेगा। सो सृजनी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड many congratulations and best wishes for your future. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. So friends, ये हमने बात की थी सिजनी करन से, जिनका आज बुक लॉन्च था, और इनकी बुक का नाम है वे टू माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के बारे में, उनके सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया, उनको जाना। बुक लॉन्च इवेंट के बाद मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। सुपर पावर ऑथर लेकर के आ रहा है एक नया इवेंट। हम शुरू करने वाले हैं दिसंबर महीने में एक नया इवेंट जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी, और ये शुरू हो रहा है 3 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे 21 ऑथर से। 21 दिन का ये इवेंट होगा। 21 ऑथर से हम बात करेंगे, उनकी 21 किताबों के बारे में, और उनकी जो जर्नी है उसे जानेंगे, उनकी किताब की जर्नी को जानेंगे, उनकी खुद की जर्नी को जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करेंगे। फ्रेंड्स, इस इवेंट को करने का मोटिव हमारा यही है कि आप सभी ऑथर्स, सभी जो रीडर्स हैं, राइटर्स हैं, वो एक दूसरे को इंस्पायर करें अपनी अपनी लाइफ की जर्नी बता करके, ताकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हमें लिंक कर जाती है, हमें एक क्लिक कर जाती है, जहां से हम अपनी जो लाइफ है उसको एक नया मोड़ दे सकते हैं। सो जरूर आप अटेंड कीजिएगा। दिसंबर महीने में 3 दिसंबर से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है, और ये लाइव होगा यूट्यूब पे, सुपर पावर ऑथर के यूट्यूब चैनल पर आएगा, और जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। सो स्टे ट्यून और जरूर अटेंड कीजिएगा इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच।